on. After completing first chapter, that is nature and purpose of business, in which we studied about economic and non-economic activities, and then we studied economic activities are classified into business, profession, and employment. After completing that particular thing, we studied business is divided into industry and trade. In first chapter, we studied in detail about type of industries, trade, commerce, auxiliaries to trade. In second chapter, we studied about forms of business organization, right? There are five forms of business organization, and those business organizations were from private sector, right? किस सेक्टर में थे बेटा? Private sector. Basically, there are two sectors, private sector and public sector. So today, before starting with the new chapter, I'm coming on to the point. I'm sharing with you one story of a student of class 11. Anita, a student of class 11, was going through some newspapers. The headlines stared at her face. Government plans to disinvest its shares in few companies. Now, a class 11th commerce student who is full of curiosity, she read this line that government plans to disinvest its shares in a few companies. The next day, there was another news item on one public sector company incurring heavy losses and the proposal for closing the same. In contrast to this, she read another item on how some of the companies under the private sector were doing so well. She was actually curious to know what these terms like public sector, disinvestment, privatization meant. I hope you all might have this curiosity also. And I want that you people should have this curiosity, right? She realized that in certain areas there was only the government which operates, like you can say railways, atomic energy, arms and ammunition, that is army, and in some areas both the privately owned and government run business were operating, because we are living in a country where mixed economy is there. There are three kind of economies which are mixed economy, capitalist economy, and socialist economy. Socialist economy in which only government runs everything. Capitalist जिसमें गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता, ओनली प्राइवेट. इन आर कंट्री वी हैव मिक्स्ड government, that is public sector, and private sector. For example, in the heavy industry sector, if we talk about Steel Authority India Limited, SAIL, BHEL, TISCO, Reliance, Birla, all were there. And in the telecom sector, companies like Tata, Reliance, Airtel operate. And in airlines, we have Sahara and Jet. So sorry to say, now we don't have these two, Sahara and Jet. Now we have Sahara and Jet, both are out of this particular sector. जब ये बुक लिखी गई थी बेटा, दे रिसेंटली गेन्ड एंट्री, लेकिन अब हम ये लाइन नहीं पढ़ सकते दे रिसेंटली गेन्ड एंट्री. जब गेन करी थी एंट्री, दैट टाइम वॉज डिफरेंट. नाउ लास्ट ईयर जेट एयरवेज वेंट अवे. सहारा को बहुत टाइम हो गया, सहारा इज नॉट in working these days. These days we have Vistara, we have Indigo, we have many other airlines, those who are working. These companies, along with government owned companies like MTNL, BSNL, Indian Airlines, Air India, she then started wondering from where from companies like Coca Cola, Pepsi, Hyundai came. Were they always here, or did they operate somewhere else in some other country? She went to the library and was surprised to know that there was so much information about all these in the books, business magazines, and newspaper. Right. So
The answer to these particular question lies in this particular chapter, that is forms of private, public and global enterprises. You must have come across all type of business organization in your daily life. In your neighborhood market, there are shops owned by sole proprietors or big retail organization run by a company. You have Reliance Smart, you have Easy Day, or you have a very small shop owned by a sole proprietor. Then there are people providing you services like legal services, a lawyer, medical services, doctor, or a compounder, or a nurse, or a medical shop being owned by more than one person, that is partnership firm. We already studied in detail sole proprietorship and partnership. These are all privately owned organizations. Similarly, there are other offices or place of business which may be owned by the government. For example, railways is an organization wholly owned and managed by the government. Post office in your locality is owned by the Post and Telegraph Department, Government of India. Though our dependence on their postal services, particularly in cities, if we talk about today, we are not dependent. That is, in cities and towns, it has been greatly reduced. This is because of plenty of private courier services firms operating in bigger towns. Then there are business which operate in more than one country, known as global enterprises. Therefore, you may have observed that all type of organization are doing business in the country, whether they are public, private or global. That means if we talk in our country, we have private enterprises, we have public enterprises that is run by the government, and global also. That means global means those who are working in more than one country. In this chapter, we will study about how the economy is divided into two sectors, public and private. Forms of public, private and global enterprises also we study in this chapter. The different type of public enterprises, their role and that of global enterprises. प्राइवेट ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके बेटा. प्राइवेट में हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल हेल्प के लिए. नाउ इन दिस section we will study about public. There are all kind of business organizations, small or large, industrial or trading, privately owned or government owned, existing in our country. हमारी country में each and every type of organization is there, right? These organizations affect our daily economic life and therefore become part of the Indian economy. Since the Indian economy consists of both privately owned and government owned, mixed है बेटा, अभी बताया था मैंने mixed economy, private enterprises भी हैं और government भी है. It is known as a mixed economy. Got the reason why it is mixed economy? The government of India has opted for a mixed economy where both private and government enterprises are allowed to operate. The economy therefore may be classified into two sectors, private sector and public sector. The private sector consists of business owned by individual or group of individual, as we have learnt in the previous chapter also. The various forms of organization are again बेटा बहुत डिटेल में पढ़ा है इनको. सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरिट्स, डीमेरिट्स, पार्टनरशिप, जॉइंट एंड दो अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. Now in this chapter we will study about public sector. The public sector consists of various organizations owned and managed by the government. These organizations may either be partly or wholly owned by the central गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या तो पूरी सेंट्रल ओन्ड होंगी और स्टेट गवर्नमेंट उनको ओन कर रहा होगा, और पार्टली बाय बोथ. दे मे बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री or come into existence by a special act of the parliament. Now what is the meaning of this particular portion, that they may also be a part of the ministry? How can
बी द पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल रेलवेज अगर हम बात करें बेटा, तो रेलवे मिनिस्टर होता है, राइट. रेलवे मिनिस्टर टेक्स ऑल द डिसीजन, जितने भी डिसीजंस हैं वो रेलवे मिनिस्ट्री लेगी, मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा वो. एंड इफ वी टॉक अबाउट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इफ वी talk about Food Corporation of India, these are the organizations which came into existence by passing a special act in the parliament. Or we can talk about Institute of Chartered Accountants of India. It also comes by passing a special act of the parliament. पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास कराना होता है कि हमें इंस्टीट्यूट बनाना है, राइट. तो वी हैव two kind, part of the ministry or by passing a special act of the parliament. The government through these enterprises participate in the economic activities of the country. The government in its industrial policy resolution from time to time defines the area of activities in which the private sector and public sector are allowed to operate. In the industrial policy resolution 1948, the government of India had specified the approach towards development of the industrial sector, and the roles of the private and public were clearly defined, and the government through various acts and regulation was overseeing the economic activities of both private and public sector. The industrial policy resolution 1956 had laid down certain objectives for the public sector to follow so as to accelerate the rate of growth and industrialization. बेटा जी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में there were certain objectives laid down कर दिए गए for the public sector. पब्लिक सेक्टर को टारगेट्स दे दिए गए कि आपको ये काम करना है, आपको ये अचीव करना है. उससे क्या होगा, अगर आज मुझे मेरे ऊपर कोई यू कैन से बेटा दो तरीके से बात होती है. एक आपका प्राइवेट ओन्ड बिजनेस है, तो आप अपनी मर्जी से काम करते हो बिकॉज यू नो दैट योर हार्ड वर्क विल गिव यू फ्रूट्स. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नो वन वांट्स टू वर्क, they are getting salary, तो they are getting fixed salary. तो how will you motivate them to work? उनको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए कि ये आपने अचीव करना है. क्यों दिए गए? सो एज टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ, ताकि जो ग्रोथ की रेट है वो बढ़ जाए. टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उनको ऑब्जेक्टिव्स दे दिए गए कि आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट ईयर इफ यू पीपल have heard in the news or in the newspaper, our education minister has laid down certain objectives for the government schools, that government, it is compulsory for the government school teachers कि आपके स्टूडेंट्स के मिनिमम इतनी परसेंटेज आनी चाहिए, और जिसकी जितनी अच्छी परसेंटेज बनेगी स्टूडेंट्स को, उनको उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे. गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को मोटिवेशन दिया गया, राइट. तो उनको उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन टू देम टू मोटिवेट देम इन अ डिफरेंट मैनर. द पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट एट द सेम टाइम म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वाज एम्फेसाइज्ड. सबसे पहला एक्ट आया 1948 में, 1956 में आया. इसके बाद 1991 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था बेटा. 1991 आर ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, he was finance minister in 1991, and our country faced a financial crisis at that particular point of time. And beta, you will not believe that intelligent man, he made various good policies to take out our country from the financial crisis. उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह was there. He was the finance minister, and he was one of the most intelligent finance minister of his own time. I am not advertising him. I am telling you the truth.
कि 1991 में जो क्राइसिस आया था, तो 1991 में जो पॉलिसी चेंज करी गई, जो रूल्स बनाए गए, वो क्या रूल्स थे? 1991 में फर्स्ट टाइम डिसइन्वेस्टमेंट हुआ. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग द शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर में से सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के पास था. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूं. बीएसएनएल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बीएसएनएल के पास था, और 1991 तक बेटा अगर आप देखो तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी. राइट? मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. 1991 में इट वाज डिसाइडेड कि अदर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कैन एंटर इनटू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. कम्युनिकेशन में जब प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी गई, हच, एयरटेल, ये लोग आए. सबसे पहले एयरटेल आया था बेटा. और जब एयरटेल ने एंट्री ली तो उन्होंने इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस बाय एयरटेल, जिससे कि मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए. इजी हो गया बहुत. अब नाउ दीज डेज इफ वी टॉक अबाउट, वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मोबाइल फोन्स. टुडे इफ वी आर managing all the things in this pandemic situation is due to the availability of technology. तो ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ के लिए और कंट्री को इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकालने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट जो है वो अपना ध्यान कहाँ लगाए? रूरल पुअर की एजुकेशन में. प्रॉब्लम क्या थी? एजुकेशन नहीं थी उनके पास, वो लोग बात को समझते नहीं थे. लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से वो लोग, हम लोग उन लोगों को ये समझा नहीं पा रहे थे कि वाई न्यू टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर देम इन फार्मिंग. आपको फार्मिंग में न्यू टेक्निक्स यूज करनी है, हम उनको नहीं समझा पा रहे थे ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन. तो गवर्नमेंट ने, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को अपना अटेंशन रूरल पुअर की एजुकेशन में लगाना चाहिए, उनकी हेल्थ पे लगाना चाहिए. यानी कि गवर्नमेंट को अपना अटेंशन बिजनेस से हटाकर रूरल पुअर की हेल्थ में, रूरल पुअर की एजुकेशन में, उसमें लगाएं, और इसमें प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे दे, जिससे कि न्यू इनोवेशंस, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो. तो गवर्नमेंट ने अपना शेयर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ट्रांसफर कर दिया कि जो जो एंटर होना चाहता है इस फील्ड में आ जाओ. इंश्योरेंस, ये तो कम्युनिकेशन सेक्टर था बेटा. अब इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें. इन आवर कंट्री देयर वर, फॉर LIC ओनली LIC वाज देयर, फॉर लाइफ इंश्योरेंस ओनली LIC वाज देयर, फॉर जनरल इंश्योरेंस वी हैव 3, वी हैड 3, सिर्फ 3 थी बेटा. नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस. ओरिएंटल, नेशनल एंड यूनाइटेड, सिर्फ 3 थी बेटा. अब ये 3 सबकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी, तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया कि और कोई प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस में अगर एंटर होना चाहता है तो हो जाओ. क्या हुआ? सारे बैंक्स इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर हो गए. SBI, ICICI लाइफ प्रूडेंशियल, HDFC, मैक्स. मतलब अब नाउ देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन इन दिस इंश्योरेंस सेक्टर. जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में ये लोग एंटर हुए, मेडिक्लेम आ गया, न्यू टेक्निक्स आ गई, न्यू प्रपोजल्स आ गए. राइट? तो many are there in the insurance sector. तो गवर्नमेंट 1991 में मेजर चेंजेस हुए थे बेटा पॉलिसी में. 1991 industrial policy was radically different from all the earlier policies where the government was deliberating disinvestment of public sector and allowing greater freedom to the private sector. अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि क्या हुआ. पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे दी कि आप आ जाओ हमारे सेक्टर में काम कर लो, कंपटीशन में आ जाओ. जैसे ही प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन में आया पब्लिक सेक्टर के साथ, बेनिफिट किसको हुआ? कंज्यूमर को.
जब भी बेटा कंपटीशन इंक्रीज होगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो कंज्यूमर को मिलेगा. कम्युनिकेशन की बात करें, BSNL was very expensive. Today we have availability of mobile phones in our hands, and believe me, it is very cheaper if we compare it with the previous time. 1989 में 90 में अगर आपको आउटसाइड सिटी बात करनी है, अलवर से लखनऊ बात करनी है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. टुडे इफ यू वांट टू टॉक टू योर रिलेटिव residing in London, you can easily talk with the help of WhatsApp call, with the help of any type of video call. Today we have lot of changes, right? तो वो क्यों possible हुआ? Due to the freedom given to the private sector. At the same time, foreign direct investment was invited from business. Foreign direct investment was invited from business house outside India. Thus, multinational corporations or global enterprises which operate in more than one country gained entry into Indian economy. Thus, we have public sector units, private sector enterprises, and global enterprises coexisting in the Indian economy. Indian economy में तीनों present हो गए बेटा. Public sector भी था, private sector and global enterprises. Right. So forms of organizing public sector enterprises. This we will do tomorrow. Today we have studied about only introduction, that what we will study in this particular chapter. We will do disinvestment in detail. 1991 की पॉलिसी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या पॉलिसी बनाई गई थी, क्या क्या चेंजेस किए गए थे, क्यों चेंजेस किए गए थे. वी विल डिस्कस इन डिटेल. थैंक यू सो मच. बाय बाय फॉर नाउ.